exponential distribution. So first we will find this distribution function, then homogeneity function, mean and variance, skewness and kurtosis, and next mean deviation about mean. Okay, so first it's density function, probability density function for exponential distribution, which is fx equal to lambda e raised to power minus lambda x greater than 0, 0 elsewhere. Okay, lambda here is parameter which is positive, so it is probability density function. So first CDF. So CDF is defined as capital F of x, which is probability x less than x. So it is given by minus infinity to x fx dx. Okay, and domain of cumulative density function is minus infinity to प्लस इन्फिनिटी. इट इज़ डिफाइंड फॉर होल रेंज. तो अब हमारे पास ना दो केसेस हैं, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, रियल लाइन 0. Because function is defined for different values of x, there are two possibilities when x is less than 0 and when x is greater than 0. When x is less than equal to 0. So in this case, fx is equal to 0. Okay, so therefore capital X will be 0. Now next case, when x is greater than 0. In this case, capital Fx will be minus infinity to x fx dx. अब जो है ना x ग्रेटर देन है 0 से, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू x, so this interval can be split into two parts, which is from minus infinity to 0 and from 0 to x. तो हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक fx dx plus 0 to x fx dx. So first integral is 0 because function is 0 in that range, plus 0 to x. fx is lambda e raised to power minus lambda x dx. अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइड बाय माइनस ऑफ लैम्डा एंड लिमिट्स आर 0 टू एक्स. तो लैम्डा गेट कैंसिल विद लैम्डा, सो इट विल बी माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स 0 टू एक्स. upper limit minus lower limit, so it will be e raised to power minus lambda x minus e raised to power 0, so it will be minus of e raised to power minus lambda x minus 1, or distributing negative sign it will be minus e raised to power minus of lambda x. Okay, so our CDF will be capital F will be 0 when x is less than equal to 0 and 1 minus e raised to power minus lambda x when x is greater than 0. So now second one, which is homogeneity function. So homogeneity function of any distribution is defined as expectation of e raised to the power tx. So expectation will be minus infinity to plus infinity e raised to the power tx into f of x dx. बट जस्ट हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से e raised to power tx को मल्टीप्लाई करना है एंड इंटीग्रेट over whole range, but function is defined from 0 to infinity, so this integral will be 0 to infinity e raised to power tx and function is lambda e raised to power minus lambda x dx. तो यहाँ से lambda कॉमन ले लेंगे, 0 to infinity e raised to the power t minus lambda x dx, integrating lambda e raised to power t minus lambda x divided by t minus lambda. Limits are 0 to infinity. Okay, lambda over t minus lambda e raised to the power t minus lambda x, limits from 0 to infinity. अब इस जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमें ध्यान से करनी पड़ेगी. अगर तो यहाँ पे t माइनस लैम्डा का साइन पॉजिटिव हुआ, t माइनस लैम्डा यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो,
ठीक है। तो उस केस में e रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट, बिकॉज व्हेन वी पुट x इक्वल टू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी टाइम्स सम पॉजिटिव नंबर विल बी इन्फिनिटी, e रेज टू पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी। तो उस केस में तो जो मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। अगर t माइनस लैम्डा का साइन क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज जीरो, तो ये एग्जिस्ट करेगा, इट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो हमें यहाँ पे t की वैल्यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, अदरवाइज ये जो लिमिट्स हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है। तो हम फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि दिस लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ t माइनस लैम्डा इज नेगेटिव। ठीक है। तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, e रेज टू पावर 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय t माइनस लैम्डा। ओके, एग्जिस्ट इफ t माइनस लैम्डा इज नेगेटिव। ओके, तो लैम्डा ओवर t माइनस लैम्डा, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 एंड e रेज टू पावर 0 इज 1। तो अगर आपने ये नेगेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूट करना है इस एक्सप्रेशन में, तो इट विल बी लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस t, प्रोवाइडेड t is less than lambda. So it will be our moment generating function. So it is our moment generating function. So now mean and variance. So moment generating function is mxt equal to lambda over lambda minus t, and mean is given by, mean is expectation of x, which can be written in moments. First moment about origin, and first moment about origin can be calculated by taking first derivative of moment generating function at t is equal to 0. तो हम मोमेंट जेनेटिव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास पहले हो जाएगा एम एक्स टी डैश, इट विल बी लैम्डा इज कांस्टेंट डी ओवर डी टी ऑफ लैम्डा माइनस टी रेज टू द पावर माइनस वन, सो इट विल बी लैम्डा इंटू माइनस वन लैम्डा माइनस टी रेज टू द पावर माइनस टू, अकॉर्डिंग टू चेन रूल लैम्डा डेरिवेटिव 0 and t minus t derivative minus 1, so it will be lambda over lambda minus t square. So it is our first derivative. So first moment about origin is mxt at t is equal to 0, which is lambda over lambda minus t square at t is equal to 0. So it will be lambda over lambda square, which is 1 over lambda. So mean of the exponential distribution is 1 over lambda. Okay, so now variance. So variance is defined as expectation of x square minus expectation of x whole square. In terms of moments, it is second moment about origin minus first moment about origin square. So second moment about origin can be calculated by taking second derivative of moment generating function at t is equal to 0. So second derivative of moment generating function is, so first derivative is here, first derivative is lambda over lambda minus t square. So taking its derivative again, so lambda is constant, d of dt of lambda minus t raised to the power minus 2 at t is equal to 0. So mu 2 dash is equal to lambda is constant and its derivative is minus 2 lambda minus t raised to the power minus 3, and derivative of minus t is minus 1 at t is equal to 0. So this expression is 2 lambda divided by lambda minus t cube at t is equal to 0. Put t is equal to 0, so it will be 2 lambda over lambda cube, which is 2 over lambda square. So second moment about origin is 2 over lambda square. So variance sigma square, which is mu 2 dash minus mu 1 dash square. So it is 2 over lambda square minus mu 1 dash come out to be mu 1 dash is 1 over lambda. So it is 1 over lambda square. So 2 over lambda square minus 1 over lambda square.
So sigma square will be 1 over lambda square. So it is our variance. Okay, so mean and variance are done. Third part, skewness and kurtosis. For skewness and kurtosis, we need to calculate the moments about mean. Okay, or we can calculate cumulants. So I'm using cumulative genetic function kxt, which is log of moment genetic function mxt. So taking log of lambda over lambda minus t. So using log a over b, which is log a minus log b. So it will be log of lambda minus log of lambda minus t. So it is our kxt, cumulative generating function. So first cumulants will be first derivative at t is equal to 0. So its derivative will be 0 minus lambda log derivative is 1 over lambda minus t, and minus t derivative is minus 1 at t is equal to 0. So it is 1 over lambda minus t at t is equal to 0, which is 1 over lambda. Second cumulant kxt, second derivative at t is equal to 0. So it will be uh, minus 1 over lambda minus t square into minus 1 at t is equal to 0. So it is 1 over lambda minus t square at t is equal to 0. So it is 1 over lambda square. Third cumulant k3, it will be third derivative at t is equal to 0. So taking third derivative, it will be minus 2 over lambda minus t raised to power minus plus 3 into minus 1 at t is equal to 0. I am taking derivative of these terms. So it is 2 over lambda minus t cube at t is equal to 0, which is 2 over lambda cube. Now fourth cumulant k4, fourth derivative kxt, fourth derivative at t is equal to 0. So it is 2 times minus 3 divided by lambda minus t raised to the power 4 into minus 1 at t is equal to 0. So it is 6 over lambda minus t raised to the power 4 at t is equal to 0. So it is 6 over lambda raised to power 4. Now coefficient of skewness. Coefficient of skewness is gamma 1, which is square root of k23 k32. So square of third cumulant is 2 over lambda cube. So 2 over lambda cube raised to the power 2 divided by k2. k2 is 1 over lambda square. So 1 over lambda square raised to the power 3. The powers of lambda are 6. 2 square is 4 divided by lambda raised to power 6, and 1 over lambda raised to power 6, which is get cancelled. Root of 4, which is 2. So gamma 1 come out to be 2. Now coefficient of kurtosis. Coefficient of kurtosis, which is gamma 2. In terms of cumulant, it is k4 divided by k2 square. k4 is 6 over lambda raised to power 4 divided by k2 is 1 over lambda square raised to the power 2. 6 over lambda 4 divided by 1 over lambda 4. So cancelling 6. So gamma 2 is 6 here. Okay. Gamma 1 is positive, gamma 2 is positive. So gamma 1 positive means curve is positively skewed. So it has a long right tail. And gamma 2 is positive means it is high peaked curve, leptokurtic.
So graph of the distribution is approximately, it has a long right tail and high peaked, so it is a type of distribution. Okay, gamma 1 is positive, gamma 2 is positive. Last part, mean deviation. So mean deviation is defined as md, which is equal to expectation of x minus mu mod. ओके, तो हमें इस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है. मीन आपके पास क्या है, 1/λ है, तो यहाँ से हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1/λ. ठीक है, सो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ x माइनस 1/λ एफ एक्स डी एक्स. बट जो फंक्शन है वो डिफाइन है फॉर 0 to infinity, so integral will be 0 to infinity mod of x minus 1/λ fx is lambda e raised to power minus lambda x dx. Okay, so it is lambda is constant, 0 to infinity mod of x minus 1/λ e raised to power minus lambda of x dx. अब हमें एक चीज़ देखनी होगी, जो लैम्डा है वो पॉजिटिव नंबर है, लैम्डा इज पॉजिटिव, 1/λ इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव. और जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी कर रहे हैं, लैम्डा यहाँ कहीं लाई करेगा 1/λ. ठीक है, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to इन्फिनिटी तो हमें स्प्लिट करना होगा इंटरवल को 0 to 1/λ और 1/λ to इन्फिनिटी, बिकॉज जो मॉड 1/λ है ना, इसकी दो वैल्यूज हैं. बिकॉज वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स इज x when x is positive, 0 when x equal to 0 and minus of x when x is negative. तो अगर मॉड में अगर कोई जो आर्गूमेंट है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हमें क्या पुट करना, माइनस ऑफ एक्स. जब x 1/λ से लेस है उस केस में ये नेगेटिव आएगी मॉड के इनसाइड जो वैल्यू है. अगर 1/λ से x ग्रेटर है तो पॉजिटिव आएगी. तो हमें स्प्लिट करना ही पड़ेगा इस इंटरवल को. तो यहाँ से हो जाएगा इंटरवल लैम्डा 0 to 1/λ mod of x minus 1/λ e raised to power minus lambda x dx plus lambda 1/λ to infinity mod of x minus 1/λ e raised to power minus lambda x dx. ओके, लैम्डा अगर मॉड में नेगेटिव नंबर हो तो हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 to 1/λ नेगेटिव ऑफ x minus 1/λ e raised to power minus lambda x dx plus lambda 1/λ to infinity x minus 1/λ, यहाँ पे पॉजिटिव e raised to power minus lambda x dx. ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1/λ x minus 1/λ e raised to power minus lambda x dx, और सेकेंड टर्म एज इट इज 1/λ to infinity x minus 1/λ e raised to the power minus lambda x dx. अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों टर्म्स को, तो माइनस लैम्डा is here, x minus first function as it is, integration of second function integration is minus lambda x divided by minus of lambda minus integration differentiation of first function is 1 and integration of second is e raised to power minus lambda x divided by minus of lambda dx, or limits are 0 to 1/λ. Second term is plus lambda, again integration will be same, x minus 1/λ e raised to power minus lambda x divided by minus of lambda minus integration differentiation of first function is 1 e raised to power minus lambda x divided by minus of lambda dx 1/λ to infinity minus lambda. So this expression remains same, 1/λ divided by minus lambda e raised to power minus lambda x, and integration of e raised to power minus lambda is again minus, डिनोमिनेटर में माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर
So it will be minus 1 over lambda square e raised to power minus lambda x. Limits are 0 to 1 over lambda प्लस लैम्डा. यहाँ से फिर से e raised to power minus lambda x, again 1 over lambda square e raised to power minus lambda x, 1 over lambda to infinity. पुट अपर लिमिट, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो सेम 1 over lambda minus 1 over lambda 0 माइनस 1 over lambda स्क्वायर ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा -1. ठीक है. लोअर लिमिट पुट करेंगे, ई रेस टू पावर 0 इज 1 एंड 1 over lambda इज माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 over lambda स्क्वायर माइनस 1 over lambda स्क्वायर. ठीक है. ये क्वांटिटी भी क्या है 0 है. नेक्स्ट टर्म में 1 over lambda अपर लिमिट पुट करेंगे, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे ई रेस टू पावर इन्फिनिटी 0 माइनस 1 over lambda स्क्वायर 0 माइनस लोअर लिमिट 1 over lambda पुट करेंगे फिर से 0 बन जाएगा माइनस 1 over lambda स्क्वायर ई रेस टू द पावर -1. ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन में ना सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, -1 over lambda, तो एक तो ये हो जाएगा -1 over lambda स्क्वायर ई रेस टू पावर -1 और सेकंड टर्म यहाँ से आएगी, बाकी सारी टर्म 0 हैं तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया प्लस लैम्डा 1 over lambda स्क्वायर ई रेस टू द पावर -1. तो अल्टीमेटली आपके पास ई रेस टू पावर -1 over lambda आ गया प्लस ई रेस टू पावर -1 over lambda. So it will be 2 e raised to power -1 over lambda. So mean deviation is 2 e raised to power -1 over lambda.